Hello everyone, मैं BL Sharma Mathso discussing chapter 6 lines and angles of class 9 mathematics, and this is very important chapter of the class 9 for the geometry. To start this chapter, Miss Lines Angles, we have to go through some previous means knowledge in that we have to start with the adjacent angles. इस चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए हमें कुछ बेसिक कंसेप्ट की जरूरत पड़ेगी। उसमें से हम पहले स्टार्ट करेंगे कि एडजेसेंट एंगल्स क्या होंगे। मेरा जो वीडियो होगा इट विल बी इन बोथ द लैंग्वेज, इट विल बी बाइलिंगुअल, मींस इन इंग्लिश एंड हिंदी बोथ। सो if first of all, we have to discuss about adjacent angles. It is very important. What are adjacent angles? Actually, if you consider here the angle alpha and angle beta, what is common in that? They have a common vertex. This is the common vertex. They have this one arm common, and the non-common arms are on the different side of the common arm. See here, two angles are called adjacent angles if they have a common vertex. This is common vertex. One arm common means you can say this arm, this arm, this arm. This arm is common. This arm is common. And number 3, non-common arms are on both sides of the common arm. ये दो non-common arm है, this arm and this arm. ये common arm के दोनों same side नहीं होने चाहिए. Means it should lie on the different side of the common arm. Means एक arm जो non-common arm है, common arm के left में है, तो दूसरी कॉमन आर्म के राइट में होना चाहिए। अगर तीन कंडीशंस फॉलो करते हैं देन वी से then that the two angles are adjacent angles. Here the angle alpha and angle beta both are adjacent angles. I'm taking some examples to explain it. इसको मैं समझाने के लिए कुछ एग्जांपल्स आपके लिए लेता हूं। We are taking some examples of adjacent angles, whether the given angles are adjacent or not adjacent angles. So first of all, I am taking this figure. In this figure, angle AOB and BOC, ध्यान से देखिए, angle AOB and angle BOC, क्या ये दो एंगल दोनों adjacent angles हैं? We have to check. They have a common vertex O. This vertex is O, and this is common for both the angles. They have common arm OB. AOB और BOC में OB arm common है, so you can write a common arm OB means that two angles AOB and BOC have one common vertex O, one common arm OB. थर्ड कंडीशन है कि जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं ओ ए और ओ सी, ये कॉमन आर्म के सेम साइड में नहीं होना चाहिए. इट शुड लाई ऑन द डिफरेंट साइड ऑफ द कॉमन आर्म. डिफरेंट साइड है, देखिए ये ओ ए और कॉमन आर्म ओ ए के राइट साइड है, और ये ओ सी जो नॉन कॉमन आर्म है कॉमन आर्म के लेफ्ट साइड है. सो वी कैन से that non-common arms OA and OC are not on the same side of the common arm OB, means on the different side of the common arm OB. That is why we can say that the two angles AOB and BOC are adjacent angles. Taking second example. Here we have to consider angle AOB and angle BOC. But see here, यहाँ पे हमने आर्म चेंज कर दिया है, ये OB इधर है. AOB और BOC में देखिए, AOB एंड एंगल BOC में OB कॉमन आर्म है. इन नॉन कॉमन आर्म OC और OA कॉमन आर्म के सेम साइड में ही हैं. दैट इज वाई, एक ही तरफ हैं, इसलिए ये दोनों एंगल्स क्या नहीं है, एडजेसेंट एंगल्स नहीं है. देखिए, दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स O, नो प्रॉब्लम. They have common arm OB, no problem. But non-common arms OA and OC are on the same side of the common arm OB. That is why we can say that the two angles are not adjacent angles.
नॉन कॉमन आर्म के सेम साइड में नहीं होना चाहिए. इट शुड लाई ऑन द डिफरेंट साइड ऑफ द कॉमन आर्म. And I am taking the third example now. Here see, OB is this side. Now we consider angle AOB and BOC in this figure. Here AOB and BOC, common arm is OB. इसमें भी है और इसमें भी है. See here, the non-common arm OA and OC are on the same side of the common arm OB. That is why the two angles are not adjacent angles. So चेक करते हैं. कॉमन वर्टेक्स ओ है, कॉमन आर्म ओ भी है, लेकिन नॉन कॉमन आर्म ओ ए एंड ओ सी आर ऑन द सेम साइड ऑफ द कॉमन आर्म ओ बी. दैट इज व्हाई वी कैन से दैट टू एंगल्स आर नॉट एडजेसेंट एंगल्स. ये एग्जाम्पल मैंने लेके आपको बताया है. आप इस तरह से इस एग्जाम से वेरीफाई कर सकते हैं कि दो एंगल्स एडजेसेंट एंगल्स हैं या नहीं है. एडजेसेंट एंगल्स आर बेसिक फॉर दिस चैप्टर. एडजेसेंट एंगल्स आपको समझ में नहीं आया तो इस चैप्टर में आपको दिक्कत होगी. नाउ वी कम टू लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स. लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होते हैं देखिए. यू कंसिडर दिस फिगर. Two adjacent angles are called linear pair of angles if their known common arm form two opposite rays or a straight line. यहां पे इस फिगर में आप देखेंगे कि टू एडजेसेंट एंगल्स है. वन एंगल इज एंगल ए ओ बी एंड अदर इज एंगल बी ओ सी. ये दो एडजेसेंट एंगल्स हैं. इनकी जो नॉन कॉमन आर्म है देखिए, ओ सी एंड ओ ए फॉर्म टू अपोजिट रेज. दिस रे, ये देखिए, वन इज ओ ए एंड ओ सी. ये दो अपोजिट रेज है और यू कैन से दिस इज अ स्ट्रेट लाइन. अगर ऐसा हो जाए तो ऐसे दो एडजेसेंट एंगल्स को हम कहेंगे कि ये दोनों एंगल एडजेसेंट एंगल्स हैं. वो लीनियर पेयर में कन्वर्ट हो जाते हैं. मींस लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स आर एडजेसेंट एंगल्स हैविंग नॉन कॉमन आर्म ए स्ट्रेट लाइन. और स्ट्रेट लाइंस मींस टू अपोजिट रेज. दैट इज डेफिनेशन ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स. दो एडजेसेंट एंगल्स अगर उनकी नॉन कॉमन आर्म एक स्ट्रेट लाइन बनाए और टू अपोजिट रेज बनाए, मींस ओ ए and OC are two opposite rays. These are the two known common of the arm of the two angles AOB and BOC. ऐसे दोनों एंगल्स को हम, ऐसे दोनों एडजेसेंट एंगल्स को हम कहते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स. नाउ वी कम टू वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते कैसे हैं, क्या होते हैं, बनते कैसे हैं. सी, when two lines intersect, see, दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगी. ये वन लाइन इज आर एस and other line is PQ. They intersect at a point. Then four angles are formed. One, two, three, form. These angles are pair of vertical opposite angles, and these two angles are also called vertically opposite angles. So, what is definition? Two angles which are formed opposite to each other when two lines intersect at a common point or vertex. Here, the common point or vertex is O, are called vertically opposite angles given below, in which angle POR. Angle POR is vertically opposite to angle SOQ, and angle POS is vertically opposite angle to angle ROQ. ऐसे एंगल्स जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करती है कॉमन पॉइंट पे तो फोर एंगल्स फॉर्म होते हैं. इनमें ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं. लेटर ऑन वी विल प्रूव दैट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. हम डिस्कस कर रहे हैं बेसिक्स ऑफ दिस चैप्टर.
Now we come to linear pair axiom. Axioms are actually basic fact taken for granted without proof. These are universal truth. Axioms वो होते हैं जिनको हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ती, यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं। और देखिए क्या है लीनियर पेयर axiom. सी, if a ray stands on a line, then the sum of two adjacent angles thus formed is 180 degree. This is the first statement of linear pair of angles and we have to understand through a figure. देखिए यहां पे एक ये जो रे है, मीन्स दिस रे स्टैंड्स ऑन दिस लाइन, therefore the sum of this angle and this angle will be 180 degree. Very important. किसी रे पे कोई एक लाइन स्टैंड करती है, इस तरह से जो दो एडजेसेंट एंगल्स बनते हैं उनका सम 180 डिग्री होगा, ये कहता है लीनियर पेर एक्सियम एंड दिस इज द फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ लीनियर पेर एक्सियम. सो वी कैन राइट हियर इन दिस फिगर, ray OP stands on a line AB, then the sum of two adjacent angles formed is 180 degree, means angle A, this O and P, and angle BOP will be 180 degree. Second statement of the same axiom is, say, if the sum of two adjacent angles is 180 degree, then their non-common arm formed straight lines means to opposite rays. अगर दो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री हो जाता है, इसका और इसका सम, तो ये जो इनकी नॉन कॉमन आर्म है, दिस एंड दिस, दे विल बी फॉर्मिंग अ स्ट्रेट लाइन. If angle AOP and angle BOP is equal to 180 degree, then their non-common arms means OA and OB will be forming to opposite rays, और opposite rays means a straight line. जब कभी हमें क्वेश्चन में गिवन होगा प्रूव दैट द गिवन लाइन इज a straight line, तो हमें इस स्टेटमेंट का, इस एक्सियम का यूज करना पड़ेगा. That's all for linear pair axiom. वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी थ्योरम फॉर दिस चैप्टर स्टूडेंट्स. अब आपको नाइन्थ क्लास से थ्योरम प्रूव करना आना चाहिए एंड द थ्योरम 6.1 इज, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, we know that when two lines see each other at a point, then vertically angles are, opposite angles are formed. We have to prove that vertically opposite angles are equal. Very, very important and very simple. First of all, we have to draw a figure. Here the two lines AB and CD intersect at point O. Then we know that angle AOC and angle BOD, vertically opposite angles, and angle AOD and angle BOC, these are two also vertically opposite angles, and we have to prove that these vertically opposite angles are equal. So first of all, how to start? First we draw the diagram, then what is given. AB and CD be two lines intersecting at O as shown in the figure. ये हमें दे रखा है, तो फिर प्रूव क्या करना है? व्हाट टू प्रूव? We have to prove that vertically opposite angles are equal, and vertically opposite angles means angle AOC is equal to angle BOD. See in the figure, angle AOC is equal to angle BOD. We have to prove it. और second इसमें यह है that we also have to prove that angle AOD means this angle AOD is equal to angle BOC. These angles are forming vertically opposite angles. How to prove it? And now proof. पहले डायग्राम बनाया, फिर गिवन, क्वेश्चन में ही गिवन है टू प्रूव, और ये प्रूफ. We know that a ray OA stands on line CD. This ray OA stands on this line CD. Then we know that by linear pair axiom, their non-common arm, the sum of their non-common, two adjacent angles thus formed will be 180 degrees. So angle AOC plus angle AOD
देयर सम विल बी 180 डिग्री, राइट हैंड साइड में रीजन लिख देते हैं। ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज फॉर्मिंग लीनियर पेरिजियम और बाय लीनियर पेरिजियम। Similarly, this ray OD stands on the line AB. So we can write ray OD stands on line CD. The similar region, angle AOD plus angle BOD means this angle plus angle this angle will be 180 degree, the same region forming by linear perigium. Now we see that this angle is 180 degree. This is also 180 degree. That is why right hand side same, so left hand side is also same. So we can write here that angle AOC plus angle AOD is equal to angle AOD plus angle BOD because both are equal to 180 degrees. So from first and second, angle AOC plus angle AOD is equal to 180 degree equal to angle AOD plus angle BOD, that is also 180 degree. Here we can cancel angle AOD and angle D दोनों तरफ है, हम इनको cancel कर देंगे. Then what is left? Angle AOC is equal to angle BOD. So we can say that angle AOC is equal to angle BOD. यही प्रूव करना. देखिए, angle AOC should be equal to angle BOD. So we can write it implies that angle AOC is equal to angle BOD. Means ये vertical opposite angles equal हो गए हैं. Similarly, जब process same होता है तो हम लिखते हैं similarly, and it can also be proved that angle AOD is equal to angle BOC, means this angle is equal to this angle. That's all for this theorem. Example number 1, पहले सारे example करेंगे, then we will be doing all the questions of the exercise 6.1 in this video. Example number 1 is because all examples are very, very important. It is given in the figure 6.9. Figure 6.9 is on your screen. Lines PQ and RS intersect at point O. And then the ratio of angle POR is to angle ROQ. That is 5:7. We have to find out all these four angles, means this angle, this angle, this angle, and this angle. How to solve it? It is given that angle POR is to angle ROQ is equal to 5:7. तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं कि हम किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर देते हैं. सो एंगल POR is equal to 5x degree and angle ROQ is equal to 7x degree because this is 5 multiplied by x, this is 7 multiplied by x. But these two angles are forming linear pair. एक स्ट्रेट लाइन के एक साइड में ये एंगल्स बनते हैं, दोनों का सम 180 डिग्री है. सो यू कैन राइट angle POR plus angle ROQ, that is equal to 180 degree, forming linear pair. In place of angle POR, put 5x. In place of angle ROQ, put 7x. So 5x plus 7x is equal to 180 degree. 12x is equal to 180 degree. So x is equal to 180 upon 12. 180 upon 12, that is 15. So the value of x is equal to 15. ये यहाँ पे 15. So now we can write. So what is 5x? Angle POR. Angle POR is equal to 5x. In place of x, now write 15. So 5 into 15. That is 75 degree. Angle POR, this angle is 75 degree. And this angle ROQ is equal to, in the figure it is given 7x. So 7 into 15, that is 115. This angle is 115. अगर ये 75 है, this angle is also 75 degree, vertical opposite angles.
If this angle is 105, this angle is also 105 degree because these two angles are also vertical opposite angles. So you can write angle POS is equal to angle ROQ, that is equal to 105 because vertical opposite angles. Similarly, angle SOQ is seen in the figure, that is equal to angle POR, also forming vertical, these are also vertical opposite angles. So 75 degree, and that's all for this question. इस तरह से हमने चारों एंगल फाइंड आउट कर लिए हैं. In the figure, it is given that ray OS stands on the line POQ, and now ray OR and OT bisect the two angles POS and angle SOQ. ये गिवन है कि ये जो RO है ये एंगल POS को बाइसेक्ट करती है. बाइसेक्ट मीन्स डिवाइडिंग इनटू टू इक्वल पार्ट्स. सिमिलरली ये ओटी रे है वो एंगल एस ओ क्यू को बाइसेक्ट करती है, मींस इट आल्सो डिवाइड, ओटी आल्सो डिवाइड, और सॉरी बाइसेक्ट into two, bisect the angle SOQ means divide into two equal parts. Now we have to find out angle POS is equal to x, then find angle ROT. हमें ये एंगल ROT को फाइंड आउट करना होगा. ये गिवन है, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल. इट इज गिवन. How to start? What is given? Ray OS ends on a line POQ and ray OR bisect angle POS. So angle POR is equal to angle ROS. Angle POR is equal to angle ROS. It is given, and we know because it bisect, that is why it is half of angle POS. ये दोनों एंगल POS के आधे आधे हाफ हाफ है. इट इज गिवन. बाइसेक्ट मीन्स डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स. एंगल POR is equal to ROS, और ये एंगल POS it is given that is equal to x. So you can write x, half of x. You can write this is half of x and this is also half of x. ये दोनों, this is half of x degree and this is half of x degree because it is given angle POS is equal to x degree. Similarly, for these angles आपको सपोज करना पड़ेगा ऑल्सो गिवन रे OT बाइसेक्ट एंगल SOQ. ये जो OT रे है उस इस एंगल SOQ को बाइसेक्ट करती है, मींस दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल. सो एंगल SOT इज इक्वल टू एंगल QOT, और इसको दैट इज हाफ ऑफ एंगल QOS, और इसको सपोज किया हमने लेट दिस एंगल इज इक्वल टू y. दिस इज y बाई टू एंड दिस इज ऑल्सो y बाई टू. अगर हमने सपोज कर लेते हैं कि एंगल SOQ इज इक्वल टू y, सो वी कैन सपोज लेट एंगल QOS इज इक्वल टू y डिग्री. सो दिस इज y बाई टू एंड दिस इज ऑल्सो y बाई टू. x बाई टू प्लस एक्स बाई टू प्लस वाई बाई टू प्लस वाई बाई टू, चारों को ऐड कर देंगे. दैट विल फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन मीन्स, and means they will, their sum will give us 180 degrees. So now angle POS and angle QOS, POS and angle QOS, they are forming linear pair or straight line. That is why their sum is 180 degree. Yahan in place of angle POS, you can write x and angle QOY, y. ये पूरा एंगल x है और ये पूरा एंगल y है. व्हाट इज देयर सम? 180 डिग्री. बट वी नीड, हमें चाहिए कौन सा एंगल चाहिए हमें? वी नीड डू दीज एंगल्स. वी नीड एंगल, वी नीड एंगल
आर ओ टी मीन्स आर ओ टी, वी नीड एंगल x+2 + y/2, ये हमें एंगल चाहिए। एंड वी हैव x+y = 180 डिग्री। सो फर्दर सिंप्लीफिकेशन, इसको दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दीजिएगा। x+y = 180 है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड डिवाइड एवरी टर्म बाई 2। देखिए ये भी हमने 2 से डिवाइड किया 180 को, y को भी 2 से डिवाइड करेंगे और x को भी हम 2 से डिवाइड करेंगे। मीन्स हाफ ऑफ x प्लस हाफ ऑफ y = 180/2, दैट इज 90 डिग्री। सो हाफ ऑफ एंगल C, this is half of angle x, this is half of angle y, so that is angle ROT, and 180/2 is equal to 90 degree। और यही हमें प्रूव करना है that angle, what is the measurement of angle ROT? The measurement of angle ROT is 90 degree, and this is answer. It is given in that in given figure OP, OQ, OR and OS are 4 rays, 4 rays है, OP, OQ, OR and OS, and we have to prove that angle POQ, this angle plus this angle plus this angle plus this angle, that is equal to 360 डिग्री, ये हमें प्रूव करना है। इसके लिए हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, किसी भी एक रे को बैकवर्ड में एक्सटेंड करना पड़ेगा, प्रोड्यूस करना पड़ेगा। और हमने इसको एक लाइन को देखिए, ये हमने इस लाइन को बैकवर्ड एक्सटेंड कर दिया है OQ को। नाउ व्हाट टू राइट, व्हाट इज गिवन, OP, OQ, OR and OS are 4 each, see in the figure according to figure, and what is to prove, यही हमें प्रूव करना है। एज इट इज लिख दीजिएगा, वी हैव टू प्रूव दैट एंगल POQ प्लस एंगल QOR प्लस एंगल SOR प्लस एंगल POS दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री। कंस्ट्रक्शन जो किया हमने, हम लिख देंगे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन, व्हाट इज कंस्ट्रक्शन, प्रोड्यूस रे OQ बैकवर्ड टू अ पॉइंट T, ये जो कंस्ट्रक्शन हमने किया ये वाला। अब इसका बेसिक कंसेप्ट ये है कि ये देखिए लीनियर पेयर बन गया, मींस द ऑल द एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्री एंड दिस एंगल इज आल्सो 180 डिग्री। दोनों को ऐड कर देंगे तो सारे एंगल्स का सम हो जाएगा 360 डिग्री। बट हाउ टू राइट इन एग्जाम, proof angle ray OP. This ray OP stands on the line TOQ. That is why this angle plus this angle is equal to 180 degree, says by linear pair axiom. So therefore angle TOP plus angle POQ. See in the figure, TOP this angle, POQ this angle, that is equal to 180 degree. And what is the reason? Forming linear pair because of linear pair axiom. और आप इसको linear pair भी लिख देंगे, आप यूं भी कह सकते हो forming a straight line. Similarly, see, all these angles sum will be 180 degree. But how to write? Similarly, the OS stands on the line TOQ, therefore angle TOS plus angle SOQ, TOS plus angle SOQ, that is 180 degree. But this angle SOQ, we can also write angle SOR plus angle QOR। इस TOS को 2 पार्ट्स में आप डिवाइड कर सकते हो, SOR and TOR. So you can write angle SOR is equal to SOQ is equal to angle SOR plus QOR. So in place of angle SOQ, we can write this angle. So angle TOS as it is, in place of angle SOQ, write angle SOR plus angle QOR, that is also equal to 180 degree. Mark it 3. अब आप इनको एंगल, इसको और इसको आप ऐड कर सकते हो। From 1 and 3 means adding, इनको और इसको आप ऐड करिए, दोनों को ऐड कर दीजिएगा।
means angle TOP plus angle POQ plus angle TOS plus angle SOR plus angle QOR, that is 180 plus 180, 360 degree. हमें इन दोनों एंगल को ऐड करना पड़ेगा. एंगल TOS. एंगल TOS means, see here, angle TOS plus angle POQ. Angle TOP plus angle TOS. See in the figure. ये angle TOP plus angle TOS. In place of that, you can write angle POR. इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा? दैट विल बी इक्वल टू एंगल POR. तो इन दोनों की जगह आप POR एंगल लिख दीजिएगा और यू विल गेट योर आंसर. So that's all for this question. Exercise 6.1, question number 1. In the figure, line AB and CD intersect at this point O, and it is also given that a sum of angle AOC plus angle BOE, that is 70 degree, and this angle BOD is 40 degree. Find angle BOE means we have to find out this angle and reflex up angle COE. See, ये angle 40 degree है. And it is also given that angle AOC plus BOE, this angle plus this angle, the sum is 70 degrees. So you can write angle AOC plus angle BOE plus angle COE is 180 degrees. C. Angle AOC plus BOE, the array OA stands on the line, or you can say forming a straight line. This angle plus this angle plus this angle, their sum will be 180 degree. You can write the reason, forming linear pair or forming a straight line. Angle AOC plus angle BOE, that is given 70 degree. So right here 70 degree plus angle COA, that is 180 degree. So you can write 70 degree plus angle COE, that is 180 degree. So angle COE will be 180 minus 70 degree. So you can write angle COE, that is 180 minus 70 degree, that is 110 degree. ये एंगल 110 डिग्री का है. 110 डिग्री. सी हियर, दो तीन तरीके से हम कर सकते हैं इसको. द सम ऑफ ऑल दीज एंगल्स, बिकॉज दिस CD इज अ स्ट्रेट लाइन एंड दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल, their sum should be 180 degree. So 110 plus 40, that is 150. So this angle will be 30 degree. Or otherwise, this angle is 40 degree. So this angle is vertically opposite angle 40 degree. So 40 plus 110 plus angle BOE will be 180 degree. किसी भी मेथड से you can calculate. So here angle COE plus angle AOE, AOC plus angle BOE, that is 180 degree. This plus this plus this, forming a straight line. So angle COE plus angle BOD, in place of angle AOC, you can write angle BOD because this angle is 40 degrees, so this angle is also 40 degrees. So you can write that is 180. In place of angle COE, you can write 110. In place of angle BOD, you can write 40. So 110 plus 40 plus angle BOE, that is 180 degree. Mean this angle plus this angle plus this angle. Since this angle is 40 degree, this is vertical opposite angle. Angle AOD means angle AOC will also be equal to 40 degree. So 40 plus 110 plus this angle is 180 degree. So angle
BOA will be equal to 180 minus 180 plus 10, sorry, 110 plus 40, 150. So angle BOA will be equal to 30 degree. This angle 30, this is 110, this is 40, you can say, right? This angle is also 40 degree. Now you can say, what about the reflex of angle COE? Here angle CO is 110 degree. क्या करेंगे? What is the formula for that? To get the reflex of any angle, you subtract that angle from 360 degree. So reflex of angle COE is 360 minus angle COE. In place of angle COE, you put 110. So you can write. So that is 360 minus 110. That is equal to 250 degree. And that's all for this question. Reflex of angle 110, that will be 250 degree. And that's all for this question. In the given figure, line XY and line MN, they are intersecting at point O, and this angle POY is equal to 90 degree. So we can write this angle POY is equal to 90 degree, and the ratio of A is to B angle here, that is given to by 2:3, and we have to determine this angle C. See here, the sum of all these angles, A, B plus A plus 90 degree, they are forming a straight line. That is why their sum is 90 degree. But since this angle 90 degree, so angle A plus B, their sum will be 9 degree. So we can write angle POI plus angle A plus angle B forming a straight line. That is why it is 180 degree. In place of angle POI, we can write angle 90 degree. So 9 degree plus A plus B is equal to 180 degree. So A plus B is equal to 9 degree. 9 degree plus A plus B is equal to 180 degree. So A plus B is 180 minus 90, that is 90 degree. A और B इन दोनों का सम 90 degree है, but it is given that the ratio of the two angles A is to B, that is equal to 2:3. ऐसे केसेस में क्या करते हैं जब रेशियो दे रखा होता है, किसी भी एक वेरिएबल से दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे. सो वी कैन राइट लेट द एंगल A be 2x and let angle B is equal to 3x. इसको x 2 को भी x से मल्टीप्लाई करें, 3 को भी x से मल्टीप्लाई करें और यहां पुट कर दें. A plus B is 90 degrees, so 2x plus 3x is equal to 90 degrees. So you can write 2x plus 3x is equal to 9 degree. 2x plus 3x, their sum is 5x is equal to 90 degree. What is x? X is 90 upon 5. And what is 90 upon 5? That is 18 degree. X का वैल्यू 18 डिग्री है. तो देखिए, here A is 2x. In place of x, write 18. So 2 into 18, that is 36. The value of B is 3x. So 3 in place of x, you write 18. So 3 into x, that is 54. So that is why angle A is equal to 2x. 2 into 18, that is 36 degree. ये एंगल 36 डिग्री है. And angle B, that is 3x degree. So in place of x, write 18. 18 3 is 54. So the angle B is 54 degree. This angle is 54 degree. But now we have to find out the value of angle C. We know that two angles B and C forming a straight line. That is why angle B plus C will be 180 degree. Their sum will be 180 degree. In दोनों का sum 180 degree होगा. So we can write
angle B plus C is equal to 180 degree, but in place of angle B, you put 54. So 54 plus C is equal to 180 degree. So 54 plus C is equal to 180 degree. That is why angle C is equal to 180 minus 54. कितना होता है 180 minus 54? That is 126 degree. So in place of C, here you write 126 degree. That's all for this question. In the given figure, angle PQR means this angle is equal to this angle. Prove that this angle is equal to this angle. देखिए ये दोनों एंगल लीनियर पेयर बनाते हैं. Sum of this angle and this angle is 180 degree. Sum of this angle and this angle is 180 degree. Let this angle is 30 degree. This angle is also 30 degree. So this angle will be 150 degree. This angle will be also 150 degree. दोनों इक्वल एंगल इक्वल हो गए, लेकिन लिखेंगे कैसे? हाउ टू राइट इन द एग्जाम? सो सॉल्यूशन फ्रॉम द गिवन फिगर, it is clear that ST is a straight line. This is a straight line. Array PQ stands on the line ST. That is why angle PQR plus angle PQS, their sum will be 180 degree. ये एंगल और इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा बाय लीनियर पेयर अगियम. Similarly, ray PR stands on the same line, so angle PRQ plus angle PRT, and sum of this angle plus this angle will be 180 degree. But now see here. This is 180 degree, this is also 180 degree. So this angle, this will be equal to this. राइट हैंड साइड दोनों का इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा. नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू पुट दिस इक्वल टू दिस. सो from 1 and 2, angle PQS plus angle PQR is equal to angle PRT plus angle PRQ. This plus this. Now further, angle PQS, in place of angle PQR, you can write angle PRQ. See, यहां पे ये एंगल पी क्यू आर है, उसकी जगह आप एंगल पी आर क्यू लिख सकते हो. सी, इट इज गिवन. So further, that is angle to angle PRT plus PRQ. But now see, angle PRQ is equal to angle PRQ. Cancel दोनों. So what is left? Angle PQS is equal to angle PRT. यही प्रूव करना है. Angle PQS is equal to angle PRT. So we can write hence proved. It is given the question in the figure, angle X plus Y is equal to W plus Z. Prove that AOB is a straight line. What to do? See. We know that the angle around a point are 360 degree, means sum of all the angles around a point, that will be 360 degree from the figure C. It means X plus Y plus Z plus W. Their sum will be 360 degree. X plus Y as it is, but it is given that the sum of it is given that W plus Z that is equal to X plus Y. So in place W plus Z here, यहां पर W plus Z की जगह आप लिख दीजिएगा X plus Y here. So you can write
x plus y, that is 360 degree. Means x plus y plus x plus y is equal to 360 degree. 1x and 1x 2x plus 1y plus 1y 2y. So you can write 2x plus 2y, that is equal to 360 degree. So x plus y will be 360 upon 2, that is 180 degree. आप देखेंगे यहां पर, see, the x and y, they are two adjacent angles and their sum is 180 degree. That is why by linear pair axiom it says when the sum of two adjacent angles is 180 degree, then their known common arms form two opposite rays. Therefore, their known common arm OA and OB will form two opposite rays because x plus y is equal to 180 degree, or opposite rays means a straight line. So you're right, that is why AOB is a line, and this is proved. When sum of two adjacent angles is 180 degree, then their non-common arm is a straight line. It is given by linear pair axiom. In the figure, POQ is a line. It is a straight line. जैसे straight line आए, हम कहेंगे कि the sum of all these angles will be 180 degree. It is also given that this ray OR is perpendicular to line PQ. ये line PQ है, उस पे OR perpendicular है, means this angle is 90 degree and this angle is also 90 degree. And this OS is another ray lying between OP and OR. In OP और OR के बीच में एक लाइन, एक रे है, OS है. प्रूव ये करना है कि this angle ROS is equal to half of angle QOS minus half of angle POS. ये प्रूव करना है. It is given 90 degree. Given फिर से लिखेंगे, OR is perpendicular to PQ and angle POQ is equal to 180 degree because forming a straight line. POQ पूरा का पूरा जो एंगल है 180 डिग्री है क्योंकि स्ट्रेट लाइन बनाता है. फ्रॉम द फिगर वी कैन राइट एंगल QOS. सी, ये QOS लेते हैं, देखिए हम QOS, QOS, फिर से देखिए QOS 90 degree plus this angle. So you can write 90 degree plus angle ROS. 90 degree plus angle ROS, that is equal to angle QOS. Now we take angle, this angle POS. This is angle POS. POS. इस पूरे एंगल में से, मीन्स 90 में से एंगल ROS को सब्ट्रैक्ट कर दूं, वी नो दैट एंगल POS plus angle ROS, their sum is 90 degree. So angle POS is equal to 90 minus angle ROS. 90 means angle POR minus angle ROS, that is angle POS. फिर से समझिए इसको. हमने QS को ROS प्लस 90, POS को 90 माइनस ROS, ये इस तरह से लिखा है. ये दोनों तरफ ROS है, देखिए दोनों तरफ 90 है, लेकिन सी द डिफरेंस. अब हम राइट हैंड साइड लेते हैं. What is right hand side? 1 by 2 into bracket angle QOS minus angle POS. In place of angle QOS, right angle ROS plus 90 degree in place of this. And in place of angle POS, right 90 minus ROS. यहाँ पे 90 minus ROS लिखिएगा. And you will get your answer.
So half as it is, in place of angle QS, write ROS plus 90 minus. In place of angle POS, write 90 minus angle ROS. Solve करिए. 1/2 as it is, angle ROS plus 90 as it is, but now minus 90 minus minus plus angle ROS. See, open the bracket. You will see here, क्या देखेंगे आप यहां पर कि एंगल ROS, sorry, plus 90 minus 90 cancelled. So that equal to, now angle you can say one ROS plus angle ROS, that is twice of angle ROS. This ROS, so again half as it is. Angle ROS plus angle ROS, that is twice of angle ROS. दोनों को ऐड कर दीजिए. And now this plus 2 and this cancel, 2 ones are 2. So what is left? Angle ROS. Hence proved. See? Angle ROS, that is left hand side, is this. And we have proved that is equal to angle ROS. यही तो प्रूव करना है. That's all for this question. It is given that angle XYZ is equal to 64 degree and XY is produced to a point P. Draw a figure from the given information. And the second question is, if ray YQ bisect angle ZYP, then find the value of angle XYQ and reflex of angle QYP. See, पहले हमें एंगल XYZ 64 बनाना पड़ेगा. So that is XY and that is XYZ. This angle is 64 degree. It is given. It is also given that we have to produce XY to a point P. इस XY को P तक हम प्रोड्यूस करेंगे. देखिए ऐसे. This point is P. It is also given that here YQ means here a line YQ. Ray YQ bisect angle ZYP. Bisect means divide into two equal part. ये देखिए. मीन्स दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल. ये इंफॉर्मेशन हमारे पास है. अब हमें एंगल एक्स वाई क्यू फाइंड आउट करना होगा. जेड वाई पी, एक्स वाई क्यू एंड जेड वाई पी, सॉरी एंगल एक्स वाई क्यू ये फाइंड आउट करना होगा. We know that this angle plus this angle plus this angle, they are forming a straight line. So the sum of all these angles will be 180 degree. So 64 plus angle ZYP is equal to 180 degree. Angle ZYP is equal to 180 minus 64. Angle ZYP is equal to, angle ZYP means this angle. 180 माइनस 64 दैट इज इक्वल टू 116. ये जो एंगल है ZYP ये 116 का है. लेकिन ये YQ, the ray YQ bisect this angle. Bisect means divide into two equal part. This angle is equal to this angle and their sum is 160 degree. So एक एंगल हो जाएगा इसका half. That will be 54 degree. 58 डिग्री. 58 डिग्री ये होगा और 58 डिग्री ये होगा. देखिएगा.
58 डिग्री एंड दिस इज ऑल्सो 58 डिग्री. देयर सम सी, इन दोनों का सम हो जाएगा 116. इस तरह से इट इज गिवन दैट वाई क्यू इज बाइसेक्टिंग द एंगल जेड वाई पी. अब हमें चाहिए, वी नीड नाउ एंगल एक्स वाई क्यू. एक्स वाई क्यू मीन्स 64 प्लस 58. एक्स वाई क्यू. This angle is 64 degree. This angle is 58 degree. What is the sum? That is 122 degree. So value of angle XYQ is equal to 122 degree. Now what is reflex angle QYP? QYP is 58 degree. Reflex के लिए इस 58 को subtract from 360 degree. So reflex of angle QIP is equal to 360 minus angle QIP. Here QIP is 58 degrees. So 360 minus 58, that is 302 degree, and that's all for this question. The reflex of angle QIP will be 302 degree. So thanks.